क्रिकेट, इस गेम के इंडिया में अनगिनत फैंस हैं। हर नुक्कड़ पर आपको लोकल टीम्स मिल जाएंगी। वीकेंड पर भरे हुए ग्राउंड्स में हर उम्र के लोग खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इंडिया में क्रिकेट जैसा बज़ किसी और गेम का नहीं है और शायद ही कभी हो पाए, चाहे वो इस गेम से कितना सिमिलर क्यों ना हो। लेकिन फिर भी पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने कोशिश की है। शिखर मेजर लीग बेसबॉल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और अब वो इस क्रिकेट जैसे खेले जाने वाले गेम को कैसे प्रमोट करेंगे उन्हीं से जानते हैं। शिखर ने मेरे साथी सूरज पांडे से इस गेम पर खुलकर बात की, आप भी सुनिए। तो पाजी, सबसे पहले तो आप बताओ कैसी चल रही है लाइफ, क्या चल रहा है? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मजे में चल रही है। अब अभी जैसे मैं एलएलसी खेल के आया तो भी और काफी टूर्नामेंट्स है वो खेलूंगा। और बाकी मस्ती है, दिवाली का सीजन है तो अभी तो ताश ही चल रही है। एंड तीन पत्ती एंजॉय कर रहे हैं एंड स्पेंडिंग गुड टाइम विद माय फैमिली। अभी मैं जैसे एलएलसी खेलने गया हुआ था श्रीनगर में, तो कश्मीर गुलमर्ग हो गया, तो क्वाइट रिलैक्स एंड वेरी हैप्पी। हाँ, ये वाला गेम आप एमएलबी से जुड़े हो, बेसबॉल नए टाइप का गेम है। मतलब हम लोग तो क्रिकेट बचपन से देख रहे हैं, लेकिन इसमें होम रन आज तक मुझे समझ नहीं आया। आपको ये गेम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है गेम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो जैसे जो हमारा पहले क्रिकेट का स्विंग था उसी तरीके का स्विंग है। थोड़ा अलग है बट ज्यादा अलग भी नहीं है। और जब बॉल आप मिडिल करते हो तो जब दूर जाती है तो उसका एक फील अलग होता है। और इसमें भी रन मांगने, लेकिन होम रन है और एक सिंगल है, फील्ड में कैसे करना है तो अलग है। लेकिन मजा आता है मुझे इस चीज का, क्योंकि जब एक बॉल जब लगती है मिडल से तो उसका एक अलग फील है। और अच्छी बात है कि एमएलबी यहाँ पे इसको बढ़ावा दे रही है, बेसबॉल को बढ़ावा दे रही है इंडिया में। क्योंकि इतने क्रिकेटर्स है या इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, तो एक नया स्पोर्ट और ग्रो करेगा तो वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है सब प्लेयर्स के लिए। कई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं खेल पाते क्रिकेट, तो उनके लिए एक और पॉसिबिलिटी खुल जाती है। या इवन बचपन से अगर जैसे अभी एमएलबी में इतना अच्छा प्राइजेस भी है और ये ग्रो करती रहेगी वक्त के साथ, तो नीचे बचपन से लोग बेसबॉल भी खेलेंगे। जैसा फुटबॉल ग्रो कर रहा है वक्त के साथ, वैसे ही बेसबॉल ग्रो करेगा और लोग आएंगे यहाँ से, फिर अमेरिका भी जाएंगे खेलने। अच्छा, क्रिकेट जो देखते हैं जो फैंस, वो इस गेम को कैसे समझे? क्योंकि एमएलबी का अपना पेज भी है, क्लिप्स आती रहती है, लेकिन वो होम रन वाली जो कंफ्यूजन है ना कि होम रन क्या है, सिंगल क्या है, तो इसको अगर आप कुछ गाइड कर पाए। तो होम रन तो ये हो गया जब वो बाउंड्री के बिल्कुल बाहर चली जाती है बॉल, और तो वो होम रन होता है। उसमें के एक दो तीन चार चार है, तो चारों को कंप्लीट करके जब होता है तो एक होम रन होता है। और नो प्लेयर्स खेलते हैं, नो प्लेयर्स फील्डिंग कर रहे होते हैं, नो प्लेयर्स बैटिंग करते हैं। एंड अगर जैसे बॉल पीछे जाती है तो फाउल हो जाता है। अगर बैट से लग के पीछे जा रही है तो फाउल हो जाता है, नहीं तो स्ट्राइक हो जाती है, मिस होती है, डिपेंड करता है अगर उसके ऊपर से जाएगी। जब शॉट मारता है और मिस हो गई तो स्ट्राइक हो गई। और वेल लेफ्ट भी करते हैं इसमें। एंड या एंड जब वो बॉल ग्राउंड में जा रही है तो वो रन मांगते हैं, तो वो रन आउट भी है इसमें। तो क्वाइट सिमिलर है क्रिकेट से, लेकिन डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा काफी डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर भी। और रन आउट का तो उससे पहले उनको क्रीज के अंदर आना है। एंड यही चीज है। अच्छा, पीछे के रन नहीं है गली क्रिकेट की तरह? ना पीछे, हाँ गली क्रिकेट में है। हाँ गली क्रिकेट की तरह बिल्कुल पीछे के रन। हाँ, पीछे के रन नहीं है। अच्छा, आपने बल्ला चलाया बेसबॉल वाला, कैसा लगा, क्या अंतर मैंने है? चलाया, थोड़ा चलाया तो सब मेरे कंधे में दर्द थी तो मैं ज्यादा चला नहीं पाया, पर मेरे को अच्छा लगा। और कोई भी ऐसा बल्ला है हाथ में तो चलाने का तो बिल्कुल मन करता है। एंड और इसमें क्या है कि जोर से ही मारना है, दम से मारना है, टेक्निक के साथ मारना है, ऐसे नहीं कि जोर। तो वो मिडिल करने का फील अलग है। तो मैं करना चाहता था और पर मैंने ज्यादा कर नहीं पाया। बट मेरे को मजा आता है ये सारी स्पोर्ट्स खेल के। अच्छा, हमने एमएलबी के इंस्टा पे देखा कई सारे इंडियंस भी इस गेम को खेल रहे हैं, लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कोई क्रिकेटर ना बन पाए तो बेसबॉल में जा सकता है। आपने अभी तक जो फील किया इस गेम से जुड़ के, इसके हिसाब से अगर आप कुछ दो चार टिप्स देना चाहें कि इन इन चीजों का ध्यान रखें। अ, इस गेम में इस गेम में टिप्स देने के लिए वैसे एडम है जो हाँ देंगे हाँ, आपको, क्योंकि मैं अभी पूरा इतना उतरा नहीं। उनसे उनकी उनसे बैकलिफ्ट ऐसी। हमेशा ऊपर रहती है और ये ऐसे करके पूरा जान से मारते हैं। और यही नहीं कि जो क्रिकेटर क्रिकेट में नहीं खेल पाए, क्योंकि इसमें ये है कि ग्रास रूट से भी स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है। उस चीज को सीखना, उस चीज पे। अभी तो जैसे क्रिकेट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा रिलीजन ही है, तो हर बच्चा खेलता है, वो अच्छी बात है साथ में। लेकिन अगर जैसे एमएलबी और
अभी अच्छा अच्छा लॉन्च हो गया है। यहाँ से इसकी चढ़ाई ऊपर की हुई होगी और वहां से फिर और ग्रास रूट पे लोग आके इसको खेलेंगे, समझेंगे, तो मजा आएगा। ऐसे ही अच्छा मतलब ये, बचपन में जैसे विकेट के साथ नहीं खेलते हैं टेनिस बॉल से, हाँ हाँ हाँ, ये हमारा अच्छा ये थोड़ी बहुत अगर आपको मतलब इन्होंने घुमाया ही होगा, फैसिलिटीज दिखाई ही होंगी, क्या लग रहा है, मतलब कितना पॉजिटिव लग रहा है आप? बहुत पॉजिटिव लग रहा है और इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर कि इट विल गो वेरी वेल। अच्छा एक मतलब एक और, मुझे वक्त बहुत कम दिया उनसे, गया है, हाँ तो उनसे भी तो कुछ नहीं पूछना हमने। आपसे एक पूछूंगा फिर दो सवाल उनसे कर लूंगा। बस एक सवाल कि जैसे आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, इतने दिन तक खेली, एलएलसी खेली, बेसबॉल का बल्ला भी उठा लिया, अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो क्या हम शिखर पाजी को एमएलबी में कभी देख सकते हैं कोई गेम खेलते हुए? यार मेरा तो अभी अब खेलने का करियर जो कम हो गया है, और अब क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की शेल लाइफ होती है, एक एज होती है, तो मेरा शरीर जो पहले 20 साल का था, 30 साल का था, वो वैसा रहा नहीं। और बाकी अगर हाँ हाथ घुमाना तो क्यों नहीं घुमाए, लेकिन एक जो प्रॉपर लेवल, प्रोफेशनल लेवल का स्पोर्ट होता है उसमें अलग जान लगती है, अलग कमिटमेंट लगती है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन उठ के मुंह उठा के आके खेल लूँ, ऐसा होएगा नहीं उसमें। तो उसके लिए एक पूरा जर्नी रहती है, रियाज रहता है, सिंगिंग में रियाज रहता है, वैसे प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, अब जोन्स से पूछ लेते हैं। हाय जोन्स, हाउ यू डूइंग? I'm doing well. How are you doing? आई एम ट्राइंग टू डू वेल। You're such a legend. It's an honor to talk to you. Like, I so, appreciate it. how's life? Life is good. We live in Barcelona, so we get to, my wife and two kids, we get to enjoy Spanish life and European life. So we are very grateful for it. And, life is a blessing. So, you learning Spanish? Yes, we're growing up in San Diego. It was basically our pseudo second language. So, yeah, me and my family, we've definitely taken the heed to learning the language. Our kids are going to be ahead of us because they're so Yeah. young and learn so much. So, I think that's what we're really going for is having the kids speak another language and having the parents have really cool experiences. Yeah. So, while researching, I got to know that in Japan, baseball is very popular. So, can you describe the major difference between the American League and the Japanese League? Well, yeah, Japan is obviously a haven for baseball. That's their number one sport. I would say the big differences are strength, power, speed, and strength. The major things. Top to bottom in a major league on a major league team, the guys are bigger, stronger, faster. Everybody's trying to hit extra base hits, home runs. In Japan, it's a totally different game. You have two or three guys that are trying to do that. Majority of the guys are playing old school baseball that you would get from the 50s and 60s, where it's bunting, hitting, run, and doing all the small things to win games, which are very important. Not as sought after in the United States and MLB. They want the big strong guys, but it was a real eye opener to really get to understand their culture and how they play baseball and how they work. And it was a really humbling to see how hard they work. They want to get to the major leagues, who doesn't? But at the same time, being successful in their league was a really high honor, and they really respected that, and I appreciated that. So, what are the plans? Like, if I want to understand, like NBA has some academies in India. What are the plans of MLB to grow the game here? Now, I don't know the exact plans to grow the game the MLB has. I According to would you, love I to. mean, according to you, like grassroots level, from should we start from the Yeah. grassroots level or like? Yes. Well, to grow the game, yes, I believe to grow the game where it's already has one of the biggest sports in the world, because cricket is their national sport. It's really hard to just, again, tell a teenager to let's play baseball when their entire life it's been surrounded following Shakir Darwan. And you got somebody like that. It's impossible to say, hey, this guy's cool. Follow this guy who you've never seen. But I think when you go and start with 7, 8-year-old, 10-year-olds, and you start with young kids and you show them baseball and you show them successful guys and you teach them how to play the game, I believe that there's enough kids in India as a country. There's a lot of people. So I believe there are enough kids to where you can start to teach the game. But you have to be consistent with it. You can't do a camp
once a year. You have to be, it's something where you have to be really consistent. Like I would say once a month, once every 3 or 4 months. You have to be really consistent, and obviously being a big country, you have to travel. You can't just go to Mumbai or Delhi. You have to go to a lot of the other cities, which would be great. There's Bangalore. I didn't even know, 6-7 million people. Like you're like third in the United States, and we've never heard of you over in the Western world. So if you're able to just go and just give camps and teach the kids baseball all throughout the entire country, I believe that a small few will adhere to it and learn to play the game and enjoy it. Okay, Bangalore is our Silicon Valley, and they have the best cricket team called RCB. You can ask Shikhar Paji. See, there you go. And like, we don't know about that, and I want to know about that. I want to go to a cricket match. So, according to you, is it easy for a cricketer to switch into basketball, or like kind vice versa? If you play one game, so you can easily go into the second one, or there are some difficulties? Well, I mean, I don't. They are similar, yes, but I mean, you have to hit a ball that's bouncing in cricket. We don't do that. You have to hit a ball that's and velocity is. They're throwing the ball close to 90 miles an hour also in cricket. So the ball is and it has to bounce. I think hand-eye coordination is number one. And if you can hit a baseball, I think you can hit a cricket ball. It's just going to take a lot of practice. I got to get out there and try it. My hands were really sweaty. That's my excuse. So I didn't hit anything well. But I think that if I got to learn the swing and learn that, I think I would be maybe successful, maybe not. I don't know. But I would love the challenge. But there's a lot. The similarities, I believe, are getting ready early. And that's the whole thing with hitting. With hitting in baseball, if you're not ready, you won't hit. If you're rushing, you won't hit. And in cricket, I've seen all the guys get ready really early. They get down and they got ready. And I think those are the similarities that we both can share. Again, one ball is coming vertical, one ball is going to bounce. But, at the end of the day, you have to hit the ball and you have to run to your position. Now, I think you guys are tougher because I've seen the security guards out there barehanding the ball. And I'm like, no, don't do that. And just like, boom, and throws it right back like it's nothing. I would never do that. Like, you go to a baseball game, fans try to catch balls barehanded, they break their hands. I would never do that. You guys are tougher in that aspect than we are. Yeah, but it hurts. It definitely hurts. The ball it's not easy to catch the ball, but it's like 140 to 150 grams only. So it's easier than baseball, yes, of course. So both sports have its own challenges, and everyone for sure. And of course, there's a lot of toughness in everything, and more of it, it's in your head. How individual takes the fear as well, and yeah, it's fun. That's the beauty of sports. You have fear in you, but still you have to do the right thing. Yeah, very true. So, okay, thank you guys. Thank you very much for your time. Thank you, Suraj, for asking. Thank you, Suraj. For asking me the same question and him as well. यार पाजी क्या बताऊं कैसे तैयारी करी मैंने क्या पूछूं समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को खुद ही नहीं समझ आ रहा गेम बहुत अच्छे खुश हो ठीक है भाई दिवाली मुबारक अरे आपको भी दिवाली मुबारक थैंक यू थैंक यू बाय बाय